Hello dear students, my name is Dr. Sangram. This is the first lecture of object-oriented programming. You can say object-oriented programming system using C++. But before continuing with C++, the prerequisite is you must have knowledge of C programming. ये जो वीडियो है जो मैं अब सीरीज शुरू कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम यूजिंग C++, इसके लिए C आना बहुत जरूरी है. If you are not familiar with the function topic, not much C, but you must know function topic. पूरा C आने की जरूरत नहीं है, लेकिन function topic आना बहुत जरूरी है. अगर आपको function topic नहीं आता तो मेरे वीडियोस है वो आप देख लेना और बाद में फिर object oriented सीखना शुरू. Otherwise it is very difficult to go with C++ or to learn C++. So prerequisite is function topic of C programming. Passing value, returning value, function calling within function. ये topics important. So it is the object-oriented programming system. In object-oriented programming system, we start our program with hash include io_stream.h input-output stream.header file. You can use conio.h if you want to use clr and getch in your program. C++ or object-oriented programming system is called as object oriented because in main program we declare the object. इसको object oriented programming system कहते हैं क्योंकि हम लोग main program में most of the program हम लोग object से लिखते हैं. जैसे C में variables होते हैं, यहाँ objects होते हैं. Now this object we create from a class name. Okay, you can say a class name. Check here, C and N is capital. Not compulsory, but this is the industry standard. If it is a class name, you have to give first letter as a capital. Now this class name, this class we have to create. This class we have to create compulsory. Class we create with the help of reserved word class. This class is the reserved word. With the help of this reserved word, we can create the class. You can give any name to your class, but reserved words are not allowed. Blank space is not allowed. And also whenever you are giving class name, give first letter as a capital. If it is a multiple words, then every word's first character you give it as a capital. I repeat, this is not compulsory, but this is as per the industry standard. ये compulsory नहीं है कि class name का C और N capital होना चाहिए. लेकिन इंडस्ट्री में ये कहते हैं कि अगर क्लास नेम देना है तो क्लास कैपिटल, सी कैपिटल, क्लास नॉट सी, क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होना बहुत जरूरी है. एंड क्लास इज अ रिजर्व वर्ड. देन क्लास स्टार्ट्स विथ ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड इट एंड्स विथ क्लोज कर्ली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन. दिस सेमीकोलन इज इंपॉर्टेंट व्हिच इंडिकेट्स एंड ऑफ द क्लास. In this class, we can declare variables and we can write functions to operate on these variables. हम लोग variables declare कर सकते हैं और उनके ऊपर operations करने के लिए, जैसे variables की value read करनी है या फिर some calculation करना है या फिर result display करना है, वो सब हम लोग functions में कर सकते हैं. But these variables and functions are declared within a class. इसलिए we call them as a member function and member वेरिएबल्स. जैसे ये वेरिएबल्स और फंक्शन जो है वो क्लास में डिक्लेयर किए हैं, इसलिए हम लोग इसको मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर्स फंक्शंस कहते हैं. जावा में हम लोग इसको मेथड भी बोल सकते हैं. मेंबर फंक्शन को हम लोग मेथड, यहाँ भी हम लोग मेथड कॉल कर सकते हैं, बट ऑलरेडी वी आर फैमिलियर विद फंक्शन टॉपिक इन सी प्रोग्रामिंग, दैट्स व्हाई आई कॉल देम एज अ मेंबर फंक्शन. सो योर क्लास कंसिस्ट ऑफ मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद एक्चुअल प्रोग्राम, let's check few statements of C, how to write in C++. जैसे C के कोई statement है, हम लोग C++ में कैसे लिखते हैं. If else, for, while, do while, everything is same. Printf is used to display information on a screen. Instead of printf, we use here cout. In printf, we have open bracket and close bracket. Here we have less than. We don't have any brackets. /n and everything, this will remain as it is here. No problem. In C programming, we use scanf statement to read the data. So this indicates read one integer number
for n1. So here we use cin, character input. This is to read the value. Cin is used to read the value or the data, and then this is the variable. We don't have to use any ampersand over here. And here we use greater than sign. If we want to read multiple values, in C programming we use it like this. We want to read two integer numbers. So I have given 2 %d. This is for n1 and n2. Here we use cin n1 and n2. And if you want to print some information with some value, then we can use here cout number is equal to less than n1. Here we don't use any %d, %f and all. This is printf and scanf of C programming and C++ programming. Now, suppose we want to create a maths class. So I am declaring here maths class. M is a capital. Check here this. M is a capital. So I am writing the class for mathematical functions. So here I am declaring three variables n1, n2, n3. I want to read value of n1, n2, n3. Then I want to calculate sum. I want to calculate average, and I want to display sum and average. So to read the value, I can use here cin greater than n1 greater than n2 greater than n3. Before any cin statement, we put cout statement just to indicate what we are expecting. So this cout statement indicates we want to read three numbers, and cin statement gives you blinking cursor. Then we will calculate sum and average. Average is equal to sum divided by 3.0. Sum is n1 plus n2 plus n3. And then we can display addition equal to sum and average equal to avg. Now, this is the simple statements. As we have seen previously, in class we can declare member variables and we can write member functions. So directly writing any program or any statements within a class is not allowed. These statements must be part of some function. So I am writing this as a function, void all. So maths is our class which consists of n1, n2, n3 and sum and float as a member variables, and we have one member function all which reads value for n1, n2, n3, which will calculate sum and average, and it will display sum and average. Now this is your class maths. We can create object in a main program as maths m. So this maths m here, this creates your object m. Now when your object m is created, your compiler will create n1, n2, n3, sum and average member variables into this m. So this n1, n2, n3, n3 sum, this all n1, n2, n3, this sum, the member variables, this all member variables comes into this here. Now if we want to read value for n1, n2, n3, sum and average, then already member function is present. This is the member function which is already exists. So if we execute this function all, we can read value for n1, n2, n3, we can calculate sum and average, and we can display sum and average. Okay, this is if we consider C programming. अगर C का हम लोगों ने देखा तो अगर हमें n1, n2, n3 sum and average की n1, n2, n3 रीड करनी है, sum and average कैलकुलेट करना है और sum and average डिस्प्ले करना है, तो फंक्शन एग्जीक्यूट करना, ये ऑल मेंबर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है. लेकिन ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज कंसिडरिंग सी प्रोग्रामिंग. सी में अगर कोई फंक्शन है तो हम ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट फंक्शन लाइक दिस. बट दिस void all is not a function, it is a member function. So there is a problem. If you try to call this will generate error because we don't have any all function. What we have is all member function. Now directly calling any member function which is written within class to call them outside of the class. This is the class boundary where we start the class. So outside of this here,
calling, that is the main program, this is not possible. If you want to access any member function or any member variable outside of the class, its scope must be public. There are four scopes: private, public, protected, and friend. When we don't mention any scope or access specifier, by default it is considered as a private. Private member function and private member variable we can access only within a class. This class starts here and it ends here. Here we can access any member function and any member variable. If we want to access any member function or any member variable outside of the class, then its scope must be public. Public member functions and public member variables we can access outside of the class. So we have to change scope of this all member function because we want to access this outside. So we can change the scope by giving public colon. Public, whatever we write after public colon, everything is considered as a public and we can access this outside of the class. जो हमें फर्स्ट प्रॉब्लम था, जो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते थे ऑल, यहाँ ये फर्स्ट प्रॉब्लम था कि वो पब्लिक था. नाउ वी हैव मेक दिस एज अ पब्लिक. Now public member function and public member variable we can access outside of the class but only with respect to object of that class. हम लोग ऐसे कॉल नहीं कर सकते. ठीक है, ये हम लोग एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि इसका स्कोप पब्लिक है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, ये हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते because this is treated as a function and this is a member function. So if you want to access any member function or any member variable having scope as public, then we have to take help of object of that class. जिस क्लास का मेंबर फंक्शन है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग कॉल कर सकते हैं, जैसे यहां मेंशन किया m.call. Now this program will execute. Now when we execute a program, our compiler will create object m in which it will create member variable n1, n2, n3, sum and average. When this statement is created, it will create this. Then m.all, it goes to execute all with respect to m. Now because of this m, this all member variables which are referred into this member function, they all considered with respect to m. So first it gives you input any three numbers, then scene will give you blinking cursor. If you input value 10, enter, 20, enter, 30, enter. If you press enter key, 10 value will be given to n1 of m. 20 value we will be given to n2 of m and 30 value will be given to n3 of m. Then it will calculate sum and average. So sum equal to n1 plus n2 plus n3, that n1 plus n2 plus n3 everything is considered from m. It will calculate average and then it will display addition equal to 60 and average equal to 20.0. And end of the function it will come back to the calling program and then end of the statement. Okay, end of the main program. Now if you check this function, in this member function, in this member function we have done three actions. Like first action, we are trying to read values for n1, n2 and n3. Then we are trying to calculate sum and average, and then we are trying to display the result. Okay, so in our one member function we are making three actions, that is read, calculate and display. So instead of combining all activities into a single member function, we can make
मल्टीपल मेंबर फंक्शन। इन रियल लाइफ ऐसा ही होता है। अगर आप कंपनी में कहीं काम करने गए तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है कि हर एक्शन के लिए, हर एक्टिविटी के लिए जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए आपको डिफरेंट मेंबर फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। सो हियर, instead of doing everything into the single member function, we have to create three member function. So I am creating one member function for read, one member function for calculate, and one member function for show. So in read, I am reading value for n1, n2, n3. In calculate, I am calculating sum and average. And in display, or in show, I will display sum and average. Now, in main program, we have created object m. To call this now, and this हर एक जो whatever functions we have written, this is after public, so we can access this with respect to object m. If you consider Java, then in Java, when we going to learn Java, अगर आप Java बाद में जब Java सीखोगे तो Java में हर मेंबर फंक्शन के लिए स्कोप मेंशन करना जरूरी है। सी प्लस में ऐसा नहीं है। यू जस्ट मेंशन अ स्कोप, इट विल कंसिडर फॉर रेस्ट पार्ट, इट विल कंसिडर दैट स्कोप। जैसे पब्लिक एक बार दिया है तो उसके आगे जितने भी मेंबर फंक्शंस लिखेंगे हर एक के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सो टू कॉल दिस वी कैन कॉल इट लाइक दिस, हियर m dot read, m dot calculate, m dot show. So when this statement is executed, it will create your object m with member variables as n1, n2, n3, sum and average. M dot read, it goes to execute read. Input any three numbers. Scene will give you blinking cursor. You have to input three numbers. If you input 10, 20, 30, 10 will be given to n1, 20 will be given to n2, 30 will be given to n3, but they are of m because we are calling this for m. So it gives you 10, 20, 30 here. End of the function, it comes back to the calling program. Then next statement, m dot calculate, it will go to execute your calculate. Sum equal to n1 plus n2 plus, इसके पीछे आगे यहाँ we don't have any value for n1, n2, n3, but this calculate member function we are calling with respect to m. Check here, नीचे, yeah, this is we are calling with respect to m. So this n1, n2 and n3 it will consider automatically from m because we are calling this calculate with respect to m. So it will calculate sum, it will calculate average. All these member variables it will consider from calling object. Here also all these member variables it will consider from calling object. This all member variables it will consider from calling object, which is the m. So every time it considers variable from member variable from m. End of the function it comes back m dot show, it will go to execute show, addition equal to sum. So this sum it will consider from m because we are calling this with respect to m. Let's say m dot read, m dot calculate और m dot show. तो रीड में जो भी मेंबर वेरिएबल्स है वो सब m के कंसिडर करेगा, कैलकुलेट में जो भी मेंबर वेरिएबल्स है वो सब m के कंसिडर करेगा, शो भी जो भी मेंबर वेरिएबल्स है वो सब m के कंसिडर करेगा, एंड दिस m इज कॉमन. ओके, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ रीड करोगे वही वैल्यू कैलकुलेट में फॉरवर्ड हो जाएगी और कैलकुलेट में जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे वही शो में फॉरवर्ड हो जाएगी. तो कोई चिंता नहीं है कि n1, n2, n3 की वैल्यू कहां से लेगा, ये n1, n2, n3 की वैल्यूज लेगा m से because calling object is same. Now here we have three member functions, read, calculate and show. Generally the member function in which we are doing some calculation, that member function we mention as a private. The member function which is doing some calculation, that member function scope we make it as a private. So here we are making function as a private. So public में अभी दो ही हमारे functions है, एक read है
और एक शो है, ये हम लोगों ने पब्लिक के ऊपर लिया है कैलकुलेट। फंक्शन सेम है, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सेम, वो सिर्फ क्या उसका स्कोप बदला है, प्राइवेट है। सो एज इट इज अ प्राइवेट, वी कैनॉट एक्सेस इट इन मेन प्रोग्राम। इन मेन प्रोग्राम वी कैन एक्सेस ओनली read and show. Read will read the value of n1, n2, n3. Show will display the addition and average. लेकिन ये सम, एडिशन एंड एवरेज जो है वो कब कैलकुलेट होगा, जब ये कैलकुलेट मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अभी हम लोग यहाँ इफ वी गिव हियर m dot calculate, this will generate error because we have scope as a private, and private member function and private member variable we cannot access outside of a class. So इसीलिए हम लोग ये स्टेटमेंट मेन प्रोग्राम में लिख नहीं सकते। ट्राई करके देखो, वो एरर देगा। लेकिन जब तक कैलकुलेट कॉल नहीं होगा तब तक वो सम और एवरेज की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं होगी। तो इसीलिए whenever any member function is having private scope, that member function we have to call from some other member function having scope of public। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट में कॉल कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहां भी कॉल कर सकते हैं शो के पहले, void शो कैलकुलेट एंड देन CM। ये ध्यान में रखना कि अगर आप लोगों ने ऐसे लिखा, जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा था और उसने मुझे भेज दिया कि सर प्रोग्राम आउटपुट नहीं दे रहा है, आपने लिखा है और ये आउटपुट नहीं दे रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट, इतना तो हमें समझ आना चाहिए अभी कि जैसे सपोज कैलकुलेट शो में आ गए, पहले ये सम और एवरेज डिस्प्ले करेगा और बाद में कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं होगा ना। फिर सम और एवरेज की वैल्यू कुछ गार्बेज आएगी। तो अगर इफ यू आर कॉलिंग दिस फ्रॉम read function, then read value for n1, n2, n3, then calculate. But if you are calling from show, then first calculate it and then display. अगर आपने पहले डिस्प्ले किया बाद में कैलकुलेट किया तो फायदा क्या है? कैलकुलेट कब होगा? तो देखोगा, अब ये प्राइवेट मेंबर फंक्शन जो है वो हमें कहीं पे तो कॉल करना पड़ेगा। दो मेंबर फंक्शन पब्लिक है, एक तो आप शो में कॉल कर सकते हो या फिर रीड में कॉल कर सकते हो। अगर रीड में कॉल करना है तो पहले n1 n2 की वैल्यू रीड करो और बाद में कैलकुलेट करो, और अगर शो में करना है तो पहले कैलकुलेट करो बाद में डिस्प्ले करो। ऐसे नहीं कि इसके बाद ये जैसे यहां मेंशन किया है मैंने, यहां कैलकुलेट, वो आंसर देगा ही नहीं ना, गलत देगा आंसर। ये मुझे किसी ने पूछा था कि कोई स्टूडेंट है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उसने मुझे पूछा था कि सर ये नहीं हो रहा है, तो मैंने उस पर व्हाट्सएप पे आंसर भेज दिया। लेकिन इतना तो अपने हमें समझ आना चाहिए, अभी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं, एक बार ऑलरेडी हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग सीखा है, तो ये समझ आना चाहिए कि बिना कैलकुलेशन के डिस्प्ले करने से कोई मतलब नहीं। तो दिस इज अ प्राइवेट मेंबर फंक्शन कैलकुलेट। So this is the first topic of our object-oriented programming system. Now, why this everything we are doing? ये अगर सी में किया था तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत इजी प्रोग्राम था, इतना लंबा प्रोग्राम नहीं होता अगर सी में किया होता तो। सी में किया होता तो 1 2 3 4 5 6 ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन का प्रोग्राम हो जाता। इतना करने की क्या जरूरत है? So why we are doing everything else? So that I am explaining in next video why this object-oriented programming system comes in a picture. This is just how to create a class and how to create object and how to call member function. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आगे के वीडियोस में अपलोड करूं यूट्यूब पे वो आपको इमीडिएटली समझ आए और आपका नॉलेज बढ़े। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल चेक व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कम्स इन अ पिक्चर। थैंक यू वेरी मच।